Assalamualaikum, how are you all doing? Welcome back to my channel, that's Noura's Kitchen. Today we have a special recipe for all of you. Now guess what the recipe is. It's very simple, very easy and very tasty recipe. It's related to the chicken, but let's see if you can guess what the recipe is. So what the recipe is, Noura? The recipe is chicken tandoori. Chicken tandoori. So today we are going to make chicken tandoori, and this recipe is all the ingredients that we're using are all homemade. There is nothing that we're going to do anything special in that, but the recipe is very tasty. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है चिकन तंदूरी, और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही इजी है. तो चलें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं. We have taken 1 tablespoon coriander, 1 tablespoon chili powder, 1 tablespoon ginger garlic paste, half teaspoon haldi, that's turmeric, 1 teaspoon salt, 2 pieces of lemon, so we have taken the juice out of it, that's maybe 1.5 tablespoon, and 3 tablespoon oil. तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हम आपको दिखा देते हैं. हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर पाउडर, हल्दी जो हमने हाफ छोटी टीस्पून हल्दी ली है, सॉल्ट हमने लिया है 1 टीस्पून जो कि एक छोटा चम्मच. हमने 2 लेमन के जूस निकाले हैं. आप एक बड़ा लेमन ले सकते हैं या 2 छोटे ले सकते हैं. हमने 1 टेबलस्पून मिर्ची का पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और ये है हमारा इंग्रेडिएंट्स. ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं. अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे, सारे मिक्स करेंगे, और फिर हम इस चिकन पे मैरिनेट करेंगे. सो we are going to take all the ingredients, we are going to put it in a bowl, we are going to mix it up, and then we are going to apply on our chicken. Now let me tell you, this chicken is not frozen, it's fresh chicken, and ये chicken जो है ये fresh है. This is farm chicken, it's not from any kind of shop, or it's not frozen. So you can see how beautiful it's looking and how tasty, yummy it looks. When you cook the fresh chicken, we are going to cook this chicken in the oven. So जब आप इस चिकन को पकाएंगे ओवन में, आप देखेंगे ये इतनी जूसी, इतनी सॉफ्ट और इतनी टेस्टी बनती है that you will be loving it. So when we cook this chicken in the oven, you will see how juicy, how tasty, and how soft this chicken is going to be because it's fresh chicken from the farm. So now let's start the recipe. I've taken the bowl. We are going to add all the ingredients. अब हमने बाउल में सारे ingredients add करेंगे. तो हमने लिया है मिर्ची पाउडर, that's chili powder, coriander powder, धनिया पाउडर, ginger garlic paste, अदरक लहसुन का पेस्ट, lemon juice, salt and haldi, turmeric and salt, oil. अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. So we are going to mix everything nicely. पूरा अच्छे से हम जो इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे. So now we have mixed everything in the bowl. So now we are going to just marinate the chicken nicely. If you marinate with your hands, you know, it really, all the masalas goes into the chicken. So we have cut the chicken into half. This is the full chicken, but we have cut it into half. हमने ये पूरा एक चिकन लिया है, लेकिन हमने इसको बीच से हाफ कर दिया है. Also note that the chicken, when you wash the chicken, you have to wash it thoroughly. And after washing, you just need to wipe it with a tissue so that all the water is absorbed. We don't need any water on the chicken. तो हमको जो चिकन है वो अच्छे से धो के इसको वाइप करना है ताकि सारा जो पानी है वो अब्जॉर्ब हो जाए और ये अच्छे से हमारे चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाए. हमें पानी नहीं चाहिए इस चिकन में. अब देखिए इसे अच्छे से हमें मैरिनेट करना है.
So we're just going to marinate it and then we will show you कि कैसी दिखती है. तो हम पूरा marinate करके आपको दिखाते हैं. So as you can see, we have marinated the chicken. You can see everywhere, all the parts, all the bones, everywhere we have marinated it nicely. And now we are going to put it in the oven. And we are going to bake it until 45 minutes to 1 hour. हमने अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर लिया है, आगे पीछे अच्छे से. अब हम इसे ओवन में डालेंगे 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक. वी हैव ऑलरेडी प्री हीटेड आवर ओवन फॉर 30 मिनट्स. हमने अपने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था और अब हम इस चिकन को ओवन में डालते हैं. Okay guys, so one more thing, we are going to add some vegetables in our chicken so that it becomes more juicy, and whatever vegetables you like you can add it. I have added some onions, carrot, capsicum, tomatoes in the chicken. So once it's baked, it becomes very juicy and very tasty. तो हमने थोड़े वेजिटेबल्स ऐड किए हैं हमारे चिकन के साथ. ये बहुत टेस्टी लगते हैं जब ये पक जाते हैं कि चिकन के साथ, उसके मसाले के साथ. आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप डाल सकते हैं. हमने जो डाले हैं वो है ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट, टोमेटोज़. अब हम चिकन को डालेंगे ओवन में और उसको पकाएंगे 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक. अब हम इस चिकन को अच्छे से रैप करेंगे फॉइल में. We are going to wrap the chicken nicely in the foil. You can see we are packing the chicken nicely. So now we are going to add the chicken. See, we are adding the chicken in the oven. We are going to cook it now in the oven. Okay guys, so our recipe chicken tandoori is ready, and you can see how beautiful and how tasty, and it's yummy. My mouth is watering. I will taste and I will tell you how it's looking, but you see how beautiful the color has been. This is the natural color, you know, that has come with the masala and everything. It's really cooked nicely. You can see how vegetables have been cooked. They are soft. देखें, आप देखें हमारा चिकन इतना अच्छे से पक चुका है और इतना मज़ेदार लग रहा है. आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें. आप देखेंगे वेजिटेबल्स कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं और हम अब इसे टेस्ट करते हैं. See guys, we have dished out our chicken and it's looking really yummy. Now we're going to taste the chicken. So Noora, let's taste the chicken. How do you feel? How is the chicken? Tandoori chicken. कैसा बना है tandoori chicken? Nice? Good nice. It's tasty, right? You should really try this recipe. It's a Noora's special recipe. And let's taste the chicken. So let's taste the chicken. So Noora is going to give us a little piece of a chicken. Okay, so Noora has given a piece of chicken. So Noora is going to try the chicken. Tandoori chicken. Try करो Noora. खा के try करो. Yummy. बहुत tasty. Okay guys, so please do like, share, subscribe to our channel Noora's Kitchen, and stay tuned for the next recipe, and don't forget to press the bell icon so that you can know that when we are posting our new videos and the new recipes. तो इस चिकन को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और हमें हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें. कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पता चले कि हम अपनी नई रेसिपी के साथ कब वापस आएंगे. तो दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगले रेसिपी के साथ. सो सी यू गाइस, सी यू लेटर विद द नेक्स्ट रेसिपी. थैंक यू एंड गुड बाय. अल्लाह हाफिज़.